लेक्चर वही बता रही है, लेक्चर खत्म होने के बाद। तो हम बड़े आदर के साथ उनको आमंत्रित करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे। बिल्कुल, जो फिजिक्स के लोग हैं हमेशा प्रश्न पूछते हैं, और जब तक कोई, हम लोगों में ये चीज़ है कि जब तक कोई नंबर नहीं होता है, जब तक कोई संख्या नहीं निकलती है, तब तक हम किसी चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं। वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए, कोई भी राम मोहन सोहन कोई भी उसको मेजरमेंट करे, उसका मापन करे, तो वो चीज़ वैसी ही मिलनी चाहिए। तभी हम लोग उसको मानते हैं कि ये जो है फिजिक्स की चीज़ है, ये साइंस की चीज़ है। क्योंकि आप लोग सब लोग, उनके जो शिष्य आए हैं, आप लोग ने पढ़ा होगा 6वीं दर्जा में, 7वीं दर्जा में, 8वीं दर्जा में, यहाँ तक कि 12वीं क्लास तक भी पहला चैप्टर जो फिजिक्स का होता है, पहला अध्याय, वो हमेशा मेजरमेंट पे होता है, मापन पे होता है। स्क्रू के वर्डियर कैलिपर्स, उसके बाद से बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं हमको, क्योंकि हम लोग भौतिक राशियाँ उसी को मानते हैं जिसका मेजरमेंट हो सके, जिनका मापन हो सके। जो चीज़ कही जाएगी, मान लीजिए हवा में कही जा रही है भाई ये चीज़ है, उस चीज़ को हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। इस चीज़ को मान लीजिए, आपको पहले शुरू में ही बताते हैं कि हम उस चीज़ को कभी नहीं मानते हैं कि जो एक आदमी कुछ और कह रहा है, दूसरा आदमी कुछ और कह रहा है। कि हमको इसमें विश्वास है, हमने दर्शन किया, दूसरा आदमी कहता है कि हम दर्शन नहीं किए। ऐसी चीज़ों में हम लोग विश्वास नहीं करते। तो हमारा निवेदन है स्वामी जी से कि हमारी भाषा में ऐसी कुछ चीज़ बताने जो अच्छी बात होगी, सही बात होगी, तो हम लोग सब उसको मानेंगे। सर मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा है कि आप लोगों को ये शुरू में इसलिए बता दिया जा रहा है कि हम लोग भले ही कुछ ना बोलें, कभी हो सकता है कि हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग कह के चले जाएंगे, हम लोग ऐसे सुन लेंगे। लेकिन हमारे विज्ञान की परंपरा रही है कि विज्ञान में प्रश्न होना चाहिए, उसका जवाब मिलना चाहिए। और प्रश्न ये भी है कि विज्ञान में जब तक आप कोई संख्या नहीं हमको बताएंगे, जब तक ये नहीं बताएंगे कि इसका हम मापन करेंगे तो ये चीज़ मिलेगा, तो आपके अंदर प्रेडिक्टिव पावर हो, तभी माना जाएगा कि आप तर्क से बता सकते हैं कि ये चीज़ करो तो तुमको ये चीज़ मिलेगी, तब भी हम उसको मानते हैं। आपने कोई ऐसी थियोरी, ऐसा कोई सिद्धांत निकाला है जिसका कि 10 साल के बाद उसका प्रूफ मिलेगा, उसका समाधान होगा, उसको भी हम लोग मानते हैं। लेकिन बिना गणित के, यदि गणित उसके अंदर नहीं है और उसके अंदर ये क्षमता नहीं है कि दूरदर्शिता नहीं है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, चलता था, तो प्रोफेसर JV नार्लिकर, जयंत विष्णु नार्लिकर स्वामी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भारत के ही नहीं, वो विश्व के बहुत ही विख्यात विद्वान वैज्ञानिक, और उनकी जो धारणा, जो उनका लेखन है, जो उनकी जो क्षमता है, उनके मुकाबले में वैसा कोई भी काम किया। तो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि ऐसे बड़े वैज्ञानिक के बीच में ये व्याख्यान होने जा रहा है। साथ ही साथ हमारे देखिए प्रोफेसर भवानी प्रसाद मंडल जी जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसके साथ ही साथ बहुत सारे उभरते सितारे यहाँ पे बैठे हुए, जैसे प्रोफेसर मंडल का एक छात्र हैं हमारे यहाँ पे हैं, उपाध्याय जी हैं, क्या नाम है उनका, क्या नाम उपाध्याय, सुधाकर उपाध्याय जी, उनके बगल में उनसे भी वरिष्ठ वैज्ञानिक है, क्या नाम है, राय, हाँ सुमित राय साहब बैठे हैं। और भी सारे बहुत सारे वैज्ञानिक यहाँ पे बैठे हुए जो हमारे, आप जब भी बोलेंगे कोई चीज मान लीजिए उनके ज्ञान से नहीं मैच कर रही है, उनके ज्ञान में जो उनके धारणा है उससे भी, उसके सामयिक नहीं है, उससे सामंजस्य नहीं है, तो वो बोल उठने वाले आदमी है, ऐसे नहीं छोड़ने वाले नहीं आदमी हो, बोल देते हैं कि भाई गलत है। लेकिन हम लोग बनाए हैं उनको कि आज के भाषण में, आज के व्याख्यान में आप थोड़ा चुप रहिएगा, जब व्याख्यान खत्म हो जाएगा तब बोलिएगा, ये हमने किया है कोशिश। और हमारी आप लोगों से सबसे गुजारिश है, हमारा निवेदन है आप लोगों से कि आप इस व्याख्यान को सुने, उसका चिंतन करें, और जहाँ प्रश्न होगा वो बाद में जा करके, because of my request, Swamiji has agreed to deliver this talk in English, but he is free to tell us in Hindi as well.
अधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सम्मान के योग रिडकर जी, विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर मलिक साहब, संयोजक प्रोफेसर मलिक मंडल साहब, अन्य वैज्ञानिक मेरे सामने उपस्थित मेरे पितृतुल्य वयोवृद्ध वैदिक और व्याकरण के विद्वान आचार्य विद सत्यानंद वेदवागी जी, सार्वजनिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान मानव सुरेश अग्रवाल, उच्चारण में शुद्धियां भी कुछ हो सकती हैं, उस पर ध्यान न दें और मेरे विचार को समझें। दूसरा निवेदन एक और है, अभी तक संसार में कोई वैज्ञानिक यह दावा नहीं कर सका कि वह सब कुछ जानता है। वर्तमान फिजिक्स डायनामिक है तो उसको उदाहरण से डायनामिक ही बने रहना चाहिए, ये नहीं कि इसी परंपरा से जो है वही सत्य है। ये फाइनमैन ने भी कहा है कि जो साइंस है वही सत्य है, दूसरा सत्य नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। एक बार पूरी थ्योरी, अगर आप कोई फिजिक्स नहीं जानता और उसको फिजिक्स पढ़ाया जाए तो जब तक उसका बेसिक नहीं मालूम होगा तब तक वो फिजिक्स नहीं पढ़ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो एक नई थ्योरी है, इसका फिलोसफी मान सकते हैं, फिलोसफी मानते सुनिए और सुन करके मैं ये भी मानता हूँ कि थ्योरेटिकल इसमें सब आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न करें, लॉजिकली देखें इसको। हिंदी, but for the reason that scientists who don't understand the Hindi language well, I have left this idea and presenting it in the English language for the first time, so that you can understand well. I am not well in speaking English, so I request you to try to understand my subject by not paying attention to the flaws of language and pronunciation. Whenever need of any interaction with you, Dr. Veda Prakash Ji Arya, Assistant Professor of Physics, will help me. I am presenting my theory to the world for the first time. Look on screen. अथातो सर्व जिज्ञासा, oldest text written by Maharishi Adre Mahidas. Apart from this, that the knowledge given by all four Vedas and Rishis, from Bhagavan Maharishi Brahma to Maharishi Dayananda Saraswati and Mahadeva Shiva, etc., has been used in this theory. This Brahman Granth is 7,000 years old, but its science and language has not been completely understood by anyone yet, especially in past 4,000 to 5,000 years. I have done scientific interpretation for the first time. Its other interpretations are far from its real science. Many interpretations named Ved Vigyan Alok, my interpretation named Ved Vigyan Alok presents Vedic theory of universe in 2,800 pages. I claim that you will not find such theory anywhere in the world from any scientist or Vedic scholar. I am presenting this theory in very brief. Please listen to it very carefully. This theory is very complex and takes long time to understand fully. Vedic Rasmi theory. Vedic Rasmi theory completely explains the formation process of so-called fundamental particles from the more fundamental things and solve many unsolved mysteries of modern science. Problems in various models of modern physics. In this contrast, I am reviewing the various famous models of cosmology prevalent in the world and presenting Vedic science of creation established millions of years ago. First, I will review some topics of modern science and somewhere I will raise only questions. Then I will explain the same by Vedic science. All the topics will be dealt in the same manner. I will try
to solve many typical problems of modern physics. What is the initial state of the universe? In this universe, there is a cause of each and every event. Nothing can happen without any cause. First model, a Rdic universe. Please look on the screen. Brain collision. Brain collision. ब्रेन्स की टक्कर से या बिग बैंग थ्योरी मानते हैं। स्ट्रिंग थ्योरिस्ट जल्दी बढ़ाइए। जल्दी नहीं करिए। Brains are dynamic objects which can propagate through space-time according to the rules of quantum mechanics. They have mass and can other attributes such as charge. We want to know from string theorists that what are these brains? What are their structure? Are they eternal? What is the mechanism of their collision? Which field responsible for their attraction and repulsion? This is cyclic process. Then will there not be any depletion of energy in this process? If yes, then this cycle will end in the future and it must have started in past. Then what is the reason of that beginning? If there were mass and charge already in them, then why universe was not created by itself? Why the collision is needed? इसको मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा, इसको साइंस के प्रोफेसर छात्र ये सब उनसे परिचित है। There is our opinion that any structured material having mass and electric charge cannot be eternal. Its reason will be cleared in the subject of eternal universe. Second model, big bonds. Cyclic universe. Some questions on these two models are as follows. How did this force originate? Did time cease to zero at Big Bang? If yes, how did it start again? What was the form of matter at that time? What is the cause of very first Big Bang? How the compression starts after the completion of expansion when gravitational force is not predominant. One of the possible reasons is given as below. Please look at the screen. I firmly believe that the nature of any energy cannot be changed by itself. As ice transforms into water, water into vapor, again vapor into water, and water into ice mutually end in the cycle. The common fact is that there is availability of H2 molecules in all three forms. In the same way, which type of matter is always present in Big Bang cycle? Modified cyclic universe. In addition to previous questions, another question is that how the kinetic energy is continuously increasing in successive evolution of the universe. Was kinetic energy zero in Big Bang beginning? Next model,
bubble universe. Along with this, some scientists imagine bubble universe. For this, please look on screen. Our questions on this are: what is the difference between negative and positive energy? What is the mechanism formation of negative and positive energy from nothing? What does the laws of physics originate? Big Bang model. Now we begin discussion on the most famous theory of modern science. First of all, I am quoting the Stephen Hawking in this context. The entire universe was spaced into a single point with zero size like a sphere of radius 0. Big Bang happened in zero volume, and in the same zero volume, the energy and density of infinite quantities being accepted. Here I want to say firmly that the meaning of zero volume can be nothing only, but nothing cannot have everything. That is infinite energy and density, etc. Not only everything, but even something can't be produced from nothing. The scientists are appearing confused in this context. Please look on the screen. Firstly, these questions arise there. What was the form of matter before Big Bang? How did that matter form? Which force condensed that infinitely dense material? What was the source of that force? Then how is it possible to have any type of exchange process in zero volume? क्वेश्चन भी है पर है इनके उत्तर भी मैं चाहूंगा बाद में, और मेरी थ्योरी आएगी उस पर आप प्रश्न नोट करते रहेगा, मैं बाद में उनका समाधान दूंगा। वैसे बहुत सारे जो आपके मन में प्रश्न उठेंगे उसका उत्तर इसमें आगे आ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बीच में न पूछे, बाद में अगर फिर भी आपका अनुत्तरित रह गया तो पूछ सकते हैं। What was the form of matter before Big Bang? How did that matter form? Which force condensed the infinitely dense material? What was the source of that force? How and then how is it possible to have any type of exchange process in zero volume? Modern science considers the exchange of certain mediated particles for the cause of all the fundamental forces. Then which particles were exchanged in that infinitely dense material? Which energy or force is resting? Inflation. What? Causes of inflation. If inflation is due to anti-gravity, then what causes gravity to act as anti-gravity? When and how inflation field created and what is its source? How does summary break and what is its cause? Its symmetry. Is there any other force in the universe responsible for symmetry breaking? See the separation process of fundamental forces. What is the mechanism of separation of four fundamental forces? Here it is shown that at Planck time there were elementary particles. How did they originate? In which form energy was present before Planck time? If it was in the form of photons, then electromagnetic force must be presented at that time. But we will not accept this. Why? Here it is shown that first of all, gravitational force is produced from unified force. While Einstein proposed that
gravitational force is not a force, but only curvature of space-time, then what exactly is gravitational force? I am leaving the next topic due to lack of time. You can check it yourself that how mass energy conservation is violated starting from Big Bang to Planck time. And after what up to now have explained it in my book. ये विस्तार से दिया है मैंने, इसको छोड़ रहे हैं समय के कारण। मास एनर्जी कंजर्वेशन भंग होता है बिग बैंग मॉडल में। अगर मास एनर्जी कंजर्वेशन सही है तो बिग बैंग मॉडल गलत है, और बिग बैंग मॉडल सही है तो मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ गलत। Eternal universe and steady state theory. Scientists of this stream consider universe eternal. Our views on this are as follows. Universe is not eternal, but its basic material cause of creation is surely eternal. Matter can never be created from nothing. The entity which is made up of some subtle elements or takes shape by binding force between those elements can never be eternal. Those scientists who consider so-called fundamental particle or photon to be eternal have no idea about internal structure of those particles or photons. Due to this, Steven Weinberg and other supporters of Big Bang model don't talk about creation of fundamental particles and photons. Both are made up of subtle rasmis. These subtle rasmi means vibrating entity. Rasmi, that is vibrating entity. These subtle rasmis create those particles or photons combined by strong binding force produced by other subtle rasmi. Any force can never be eternal. Modern science is in confusion about force. Feynman also writes accepting it. If you insist upon a precise definition of force, you will never get it. I have written elaborately about types of force in my book. I have described 9 main fundamental forces. In that, 9 types of fundamental force. I explain this topic in any other conference, or you can read my book, which is available in Hindi language only, and learn my wonderful secrets about force. Here in short, I would like to say that the leakage of certain rasmis and their exchange between the two particles produce such force. The substances which have no internal structure can never experience attraction and repulsive force. That is, they cannot interact, and without interaction, particles of next stages cannot be formed. Every particle in the universe always emits some very subtle rasmi. Emitter rasmis continue to be exchanged between the two particles. However, some of those rasmis leak in space. Due to this, ultimately every particle or photon created from rasmis will definitely be destroyed, and no particle or photon can be eternal. It also ensures that the universe can never be eternal. Summary. In addition to these, some other models are also in progress. Due to shortage of time, it's not possible to discuss all these here. On these models, there are many serious questions, and modern science is not able to answer those questions yet. The violation or conservation of mass and energy is a big problem. The cause of and process of creation of fundamental forces and particles is unknown. The reason of separation of forces and symmetry breaking is not clear. There is no reason for origin of mass
energy and electric charge. Cause of explosion is still unknown. Due to this, modern cosmology is not able to understand the initial state of universe and the process of creation. Next chapter. Views of ईश्वर की बात आएगी तो आप कहेंगे रिलीजियस व्याख्यान है, इसलिए साइंटिस्टों के प्रमाण दे रहा हूं। साइंटिस्ट ईश्वर के विषय में क्या कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनकी चर्चा में 3 दिन से सुन रहा हूं, हर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन को सम्मान से उद्धृत करते हैं। आगे बढ़िए। मैक्स बॉर्न, जोसेफ एस टेलर, लॉर्ड विलियम कैल्विन, सर आइजैक न्यूटन, मैक्स प्लैंक, काकू, निकोला टेस्ला, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, पॉल डेविस, लुइस पास्चर, एडवर्ड रॉबर्ट हैरिसन, Back could comment, if we need an atheist for debate, we go to the philosophy department. The Greek department isn't much used. Next. Mathematicians who call themselves an atheist should think over it. Next. Summary. For these ideas of modern scientists, it becomes clear that many renowned physicists and mathematicians accept the existence of God. They consider atheism a result of little knowledge. All universe is created and operated by super intelligent laws. The regulator of these laws is God. On these thoughts of scientists, I must say that these scientists are unaware about the mechanism of God's act. I will try to explain it very briefly. Next chapter. क्वार्क के बाद छंद रश्मि, प्राण रश्मि, व्याप्ति रश्मि, रश्मि विद वाइब्रेटिंग एंटिटीज, मनस्तत्व. ईश्वर गॉड कंट्रोल्स एंड डिफॉर्म्स दिस फंडामेंटल मटेरियल थ्रू ओम रश्मि. बाद में
Let me explain my Vedic theory of universe in brief. Please listen it very carefully. If you miss something, then you will not be able to understand the whole theory. And I also request you that no one in the world can make you understand it in this way. First of all, we discuss the most elementary stages of creation. Please look on the screen. In this picture, you can see the modern science starts from formation of Agni. Agni means photons or fundamental particles. From this, you can assume that how far I am talking about you forward from modern physics. Initial state according to Vedic theory. There are three eternal causes in universe. Ishwar, God, which is formless, omnipresent, all-powerful, eternal, creator of universe, supreme, conscious, omniscient. Jeev, soul, conscious controller element in the body of every living being. Prakriti, fundamental, eternal, material cause of creation. They can neither be produced nor destroyed. Supreme conscious element is called Ishwar, God, who creates universe from Prakriti material for the welfare of the souls. A material can be termed as eternal when it is not formed by any combination of constituents. God and soul both are deformationless and undivided entities, and Prakriti is material which can be deformed into large entities. When conscious element God induces it, Prakriti is also eternal because it is not a combination of anything. Here we discuss only Prakriti. What is Prakriti? Basic material cause. Prakriti is the state of matter which is following characteristics: infinite volume, infinite darkness, absolute zero mass, totally heatless, homogeneous, totally inactive, motionless, energyless, no light or illumination, no space, no emptiness, absence of any type of particles or waves, forceless, soundless, chargeless, no vibration or fluctuations, imperceptible. Ishwar is the base and controller of Prakriti material, but not its creator. Ishwar is not its creator. The material with these symptoms is definitely eternal. More subtle state of matter beyond this is never possible. This is also the final limit of destruction of any material. Someone can raise question that energy was not present in the beginning, then how it occurred? Is energy ever created or destroyed? Modern science considers that one form of energy transformed into another but cannot be produced or destroyed. Then, in which form energy exists in Prakriti state? To answer this, I would say that if the word energy takes property of being able to work, then calmness of this property will be called Prakriti. You can consider this as a special and unique state of potential energy. You can ask that in the potential energy, for example, energy is stored in the bond of molecules which induced by external force and converts into kinetic energy. Then what about the Prakriti? In this, I would like to say that energy in Prakriti, which is itself a property, exists in the latent form within these three unexpressed and calm properties of Prakriti. Subtle vibration like para, om, rasmi start
to be generated. In calm state of Prakriti by specially activated काल induced by God. काल जिसे आप टाइम कहते हैं, वास्तविक टाइम और काल एक नहीं है, but टाइम जिसको कह सकते हैं काल. This starts to produce the most subtle kinetic energy. Fundamental properties of Prakriti, Sattva, which creates attraction, force and illumination. Rajas, which produces repulsive force, motion and activeness. Tamas, which produces inertia, darkness and inactiveness. Samyavastha, equilibrium or totally inactive state. Sattva, Rajas and Tamas are present but completely inactive. Samyavastha of Sattva, Rajas, Tam is called Prakriti. Now let's try to understand what is Rashmi. Subtle fluctuation, vibration which controls and produces further fluctuation and vibration is called Rashmi. Whole universe or type of waves, particles, space, etc. is made up of these fluctuation, vibration or Rashmi. These vibrations are so fine that they can never be detected by any technology. Rdic. Rashmis are produced in the beginning of the creation. The Rashmi or waves have four stages. First, para. Sound is heard by soul and travels from manastattva to soul. Can never be detected. Second, Pashyanti. Sound travels from brain to manastattva, can be detected in future. Madhyama. Sound travels from eardrum to brain. Electric signals. Vaikhari. Sound hits on eardrum from exterior, well-known form of sound. Here, you can ask the question that how the sound waves were produced initially. I would like to say that John Griffin mentioned the sound waves in dark matter and cosmic rays. Lichtenstein has also mentioned the presence of sound waves in early universe in his book, The Trouble with Physics. The sound waves may be Rashmi of Madhyama state. Here I am talking about origin of more subtle level para state of sound wave, which can never be known by any technique. However, I believe the second state of sound wave, Pashyanti, will be detected by modern science with the development of more subtle technique in future. Summary. In Vedic theory, the initial state of universe is clear and logical. The cause of beginning of creation is clear. There is no problem of conservation of mass and energy because mass and energy both are originated from Prakriti. The existence of God is accepted in order to explain the process of beginning of creation. Here, logical description of Prakriti, which is root cause of whole universe, has been explained. Whole universe is created from Prakriti, and after a certain time period, it transforms in it again. However, the cycle of creation and destruction of universe is eternal. All processes are operated according to the laws of governed by God, law of physics. All the laws of physics are always definite and perfect. All the constants are so defined that even a slight change can endanger the existence of the universe. The whole universe is fine-tuned and it is tuned by God. Every small and vast composition of the universe is made in a very intelligent way. It is mandatory to have superconscious authority behind all this. This superconscious authority called God. Next chapter. What is time? मॉडर्न साइंस पर क्वेश्चन है
what is time? Second, how does it begin at the time of Big Bang? Is time an illusion or some real entity? What is its role in the universe? What we mean by negative and zero time? Unless we know its true nature, how can we say that it will be negative or zero? We talk of increase and decrease of time by measuring the speed of an event. But whether it is needle or watch or the speed of particles, why we don't think that energy and force are cause of every motion, and this motion can be reduced or stopped by applying opposite force or energy. Due to this, it appears that stop, increase and decrease of time is an illusion. If we reduce the speed of fan, it doesn't mean that time has decreased. No one knows what time exactly is. Rather, we have considered time period as time. Vedic view is for Vedic Vichar. First step, activation of Kal, time. First of all, Ishwar God activates the most subtle Om Rasmi in para state. This Om Rasmi is the most subtle and initial, actually eternal but imperceptible form of sound. Always induced by Ishwar God, the fundamental source of all types of forces, energy, matter and space, etc. This Rasmi activates Sattva and Rajas properties of Prakriti. This state of Prakriti is called Kal, time. The time is a real entity, not mere of the word time, which I am going to tell now. Properties of Kal. Kal has continuous motion and most subtle force. Kal always travels in forward. Due to absence of tamas, Kal never stops. Kal uniformly exists everywhere. Except Ishwar God, Kal is not induced by anything. Kal creates and induces every created thing. One fluctuation of parastate of Om Rasmi is the smallest unit of Kal. This fluctuation can never be detected by any technique. This fluctuation is very vast. Due to this, Kal is assumed to be harmonious entity. None other matter is more harmonious than this except God and Prakriti. The change in the speed of time is assumed when there is a decrease in the speed of an electronic transition in the atomic clock. But question is, why there is a change in the speed of that transition? When we are not sure about the nature of time, then how can we claim about its dilation? Someone can say that the technology based on the mathematical interpretation of the current concept of time is working properly. Launching satellites in their orbit around different planets cannot be possible on the basis of mathematical misconceptions. The intense gravity, or in the case of moving rocket, may be true. With this, you cannot conclude that time has slowed down. In fact, the speed of any process slows down in both of these conditions. We will discuss it in due course. How subtle Rasmi that Kal induce different Rasmi? And in the same way, how does the subtle Rasmi induce macro Rasmi? To understand it, have a look on the following picture. Induction of major force by minor force. Of any conscious, the force of human being induces the small block in the same way God induces the Kal, time. This motivation is universal. It is not possible to create universe by providing force only once. The God-induced Kal always keeps motivating all the person Kal. The para state of Om Rasmi is induced by God
Then God-induced call starts creation process of generating fluctuations in initial state of Prakriti element. God-induced call is always ruler and operator of the whole universe. Next chapter. Beginning process. Second step. First step, call. Second step, beginning process of universe. Call induces and disturbs Prakriti and create Maya Tattva. Maya Tattva has all three properties of Prakriti in active state. In this state of universe, there is a very small tendency to oppose motion and very small force of attraction and repulsion. Maya Tattva is the most pervasive material in all created things, and it controls all these things. Maya Tattva is always conserved and filled everywhere. Now, Maya Tattva gets excited and appears as Ahankara Tattva, and Ahankara Tattva gets excited and appears as Manas Tattva. Manas Tattva. Manas Tattva is like an ocean of many fluctuations or vibrations. If Manas Tattva is an ocean, then Rasmis are different type of waves. From the fluctuation or vibration or Rasmi or type of energy, forces, fields, space, and elementary particles, etc. will be produced in last stages. Now, describe the classification of Rasmi. This topic is innovative and very subtle than modern physics. I believe that you will try to understand this topic patiently, not in a technical way, but with logical viewpoint. Rasmi of first generation. Bhu bhuva swaha mahajana tapas satyam him grim. Property of these Rasmi. A main content of elementary particles, atoms, molecules, etc. Bhuva, a main content of space. So, a main content of all type of photons. Maha, used to combine, squeeze and expand other Vyarti Rasmi. Jana, used to enrich, absorb and emit other Vyarti Rasmi. Tapa activates other Vyarti Rasmi by sitting on their side. Satyam holds and controls other Vyarti Rasmi very well. Him combined Chandra Rasmi, larger Rasmi. Grim excite and illuminate Chandra Rasmi. Rasmi of second generation. Primary Prana Rasmi. Sutra Rasmi means a vibrating entity. Sutratma Vayu, Dhananjaya, Pran, Apan, Vyan, Udan, Nag, Kurma, Krikal, Devadat. Property of the Rasmi is very brief. Sutratma Vayu Rasmi are created and expanded in the form of branches and sub-branches and make net-like structure. Bind and hold everything in the universe. Dhananjaya have velocity 4 times the velocity of light. The light or any electromagnetic wave is dragged by them. That's why these waves have such a high velocity. And force, the Vyan Rasmi and other Rasmi. Pran are the main cause of all attractive forces in the universe. Fluctuate from inside to outside in all type of particles and waves. With Apan Rasmi, they give path to all quanta and elementary particles in space. Apan Rasmi fluctuate in opposite direction of Pran Rasmi. Whole Pran Rasmi are the main cause of all repulsive forces in the universe. Vyan fluctuate between Pran and Apan Rasmi, also between pairs of other Rasmi. Saman balance the force and velocity between pairs of Rasmi, especially Pran Apan Rasmi. Udan help to produce property elevation in different types of Rasmi, especially Pran Rasmi. Nag are the helping Rasmis of Pran
travel more slowly in comparison to all other Rasmi. Purv. Briefly, induce, control and enforce upon Rasmi with the help of non-Rasmi. Critical. Provide shrillness to non-Rasmi whenever required. Devaratta. Enforce some Rasmi whenever required. Rasmi of third type, third generation. Mass Rasmi. Mass Rasmi are produced after 30 fluctuations upon each. They do necessary work for combination of different Rasmi by exciting particular parts of those Rasmi who behave like female and male. Kind of mass Rasmi. Madhu. Help in combination process and provide easiest path to various Rasmi. Process possess more attractive force than other mass Rasmi. Briefly, sir, I pass over mass Rasmi due to lack of time. Ritu Rasmi. Ritu Rasmi is a combined form of two particular mass Rasmi. The Rasmi help in rotation process of particle and celestial bodies. Kind of Ritu Rasmi. Vasant, Grishma, Varsha, Sharad, Hemant, Shishir. Property. We leave this property and come छंद रश्मि। एक घंटा हो गया, देंगे फिर देंगे। हाँ बिल्कुल। 10 मिनट बाकी है। देर से शुरू हुआ था। 5 मिनट और लिख दो। हाँ। शुरू हुआ था 2:30 बजे। 2:30 शुरू हुआ? 2 बजे थोड़ी शुरू हुआ। हाँ बीच में ब्रेक तो कोई बात नहीं, आपको भी मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा और 10 मिनट। हाँ वो प्रश्न all fluctuations or vibrations created in Manastattva are called Chand Rasmi. Main Rasmi is Chand Rasmi. All Chand Rasmi behave like Yosha with respect to Manastattva, who behave like Vrisha, male. Please note, please note that the creation process of space, Malika, please note that the creation process of space, which is subtlest element known by modern science, is not started yet. Please keep listening with patience. The universe is very, very complex game of Rasmi or vibration. Some property of Chand Rasmi. These Rasmi are main cause of illumination and force. These Rasmi cover all particles and waves. These Rasmi hold celestial objects and particles. These Rasmi are main material cause of whole universe. Classification of Chand Rasmi. फर्स्ट क्लासिफिकेशन छोड़ते हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन. सेकंड बट मेन क्लासिफिकेशन ऑफ छंद रश्मि. गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति. गायत्री रश्मि possess 3 types of motion, are more subtle, illuminated and faster than other Rasmis. Whitish light produced by them play important role in creation of electricity in all type of particles, planets, satellites, etc. Are also present in all material, that is space, quantum, stars in abundance. Cover from Rasmi light skin and help in compressing, holding, controlling, carrying, and supporting of different waves and particles. Ushnik. Cover Gayatri Rasmi like hair and its attraction force in other Chand Rasmi. Play important role in production of heat, produce speckled color and help in penetrating, covering, combining activation of waves and particles. Understood? All other Chand Rasmi in a systematic way are light discharge of Pran Rasmi, help in penetration, combination of waves and particles, brownish red color from these Rasmi. Brehati,
surrounded other Chandrasmi from all directions, behave like sex organ of Pranarasmi, play main role in formation of shape of the particles. All particles in celestial bodies produce black color. Pankti possess 5 types of motion, are continuously absorbed by different particles and waves, behave like bone marrow of Pranarasmi, produce blue color. Trishto, in the center of stars, these Rasmis are in abundance, have highest penetrative power, and force weaker Chandrasmi, behave like muscle of Pranarasmi, demolish the Vedic dark energy. वैदिक डार्क एनर्जी, साइंस डार्क एनर्जी नहीं जानता, हमारे यहाँ वैदिक डार्क एनर्जी है, लेकिन ये अलग सेमिनार का विषय है. Wave, 4 different waves and particles in space produce red color. Jagati are more extended than all other Chandrasmi, play main role in absorption and emission of photons or particles. Behave like spine of all other Chandrasmi and bone of Pranarasmi, travel like leaping and jumping, produce brown color. सब क्लास टीचर छोड़ते हैं. Effect of Chandrasmi. 7 types of effect of every Chandrasmi. If you wish to understand the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. Nikola Tesla. The root cause of universe, summary इसका chapter का. The root cause of universe is induction and deformation by Carl is start to generate various types of subtle Rasmi in phased manner. In the subtle matter, Carl keeps generating very subtle fluctuations or vibrations. These vibrations are in the form of Rasmi. Each micro vibration produces a macro vibration from itself by combination. Various vibrations in the form of Rasmi have different properties. From the Rasmi, space, photon, mass, charge, various fundamental particles and energy known or described by modern physics will be produced in upcoming stages. Somehow, we can compare larger Chandrasmi to their strings, which are the element of fundamental object in string theory. Thus, our Vedic physics presents this process in much more phased manner than string theory. Here, properties of every vibration like Rasmi are explained very clearly. These Rasmis are called Vedic Chandrasmi. The sound waves which are produced when mantras described in Vedas are sung with proper rhyming, are found in the form of para and pashanti state in the universe. These Rasmi is considered comparatively more subtle Rasmi. Om Rasmi is present in every Rasmi, God is present everywhere, everything is controlled by these two. God as part his objective and purpose operates every Rasmi with supreme intellect through Kal. Next है what is space? इसको बाद में करते हैं. स्पेस क्या है वो बाद में करेंगे. 1 घंटा हो गया, ब्रेक दे रहा हूँ आपको. आपसे यहाँ तो मुझे ब्रेक चाहिए था. हाँ कि आपके वहाँ कोई ऐसा 3 गुना जो है प्रकाश के वेग से 4 गुना, ये प्रकाश का वेग जो आप बता रहे हैं वो कहाँ से मिला है? ये जो 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁴ लिखा है भैया मीटर पर. ये पहले बताइए कहाँ से आपका, हमारे वहाँ तो मेजरमेंट होता है, आपको वहाँ कहाँ से? उसके बाद 3 टाइम 4 टाइम बता रहे हैं, वो जो टोटली अगेंस्ट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो हमारे वहाँ फिजिक्स में इसको कोई भी मानने को तैयार नहीं हुआ कि कोई चीज 4 गुना प्रकाश के वेग से बढ़ती है. हाँ कहाँ से वो नंबर आपको कहाँ से मिला? वो नंबर 3. देखिए एक प्रश्न आपका आया, आप मानते हैं कि जो जिसको मेजर कर सकते हैं उसी को मानना है, बाकी गलत है. इसका मतलब
न्यूटन के समय रिलेटिविटी गलत थी क्योंकि वह उसको नहीं जाना गया था। सुनिए, कल बात हुई थी, दो साइंटिस्ट कह रहे थे ग्रेविटी की 30 थ्योरी चल रही है। 30 थ्योरी सभी छात्र जानते हैं। मैक्स एक बॉर्न की थ्योरी बताई थी। 30 थ्योरी का 30 प्रकार का मैथमेटिक्स है, उन सब के एक्सपेरिमेंट होंगे। 30 कहती है सही है। व्हाट इज रियलिटी? सुनिए, सुप्रिया कार प्रोफेसर डी से हमने पूछा कि सभी मॉडल का अपना मैथ है, सभी के अपने ऑब्जर्वेशन है, सभी के एक्सपेरिमेंट हैं। व्हाट इज रियल? रियलिटी क्या है? कोई एक सही है? यूनिवर्स एक है। हाँ, एक मिनट सुनिए आप, सुनिए सुनिए सुनिए। देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूं, क्या साइंस ये मानता है कि हम आज जो जान रहे हैं उसमें कभी संशोधन नहीं होगा? पहला प्रश्न मेरा। अगर आपको मेरी थ्योरी के बाद परिवर्तन के लिए कुछ बिंदु मिल जाते हैं तो आपके लाभ के कारण मुझे साइंटिस्टों से कुछ चाहिए नहीं। अगर आपको ये लॉजिकल लगे, आज आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, कल टेक्नोलॉजी बनेगी और आप खोज करेंगे, तब आप कहेंगे कि स्वामी जी ने कहा था आज ये मिला है। मैं तो करूँ देखिए, धूल के जब हवा चलती है हाँ, वो नंबर मुझे नहीं मिला, वो नंबर ऐत्रेय महिदास ऋषियों को मिला। आज टेक्नोलॉजी सुनिए, साइंस कहां तक देख सकता है? फोटोन से आगे साइंस को नहीं पता, क्योंकि उसका देखने का साधन फोटोन है। ठीक है ना? अगर मैं पूछूं फोटोन का स्ट्रक्चर क्या है, इसका आपके पास कोई साधन नहीं है। फोटोन जिन स्ट्रक्चर जिस कंटेंट से बना है उस कंटेंट तक जाने वाली कोई टेक्नोलॉजी आपके पास विकसित होगी जिस दिन, उस दिन जान जाएंगे कि फोटोन क्या है। और जैसे हवा चलती है, हवा के साथ धूल उड़ती है। ध्यान दीजिए, हवा का वेग और धूल का वेग में अंतर होगा। कागज हवा में उड़ाइए, हवा 20 की स्पीड से चलेगी तो कागज 5 की स्पीड से 6 की स्पीड से चलेगा, हवा की स्पीड से नहीं चल सकता। उसी प्रकार ये धनंजय प्राण जिसकी मैं कह रहा हूं 4 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, वो प्रकाश की रश्मियों को खींच के ले जाता है। उसका उन्होंने समाधि अवस्था इंट्यूशन के द्वारा, इंट्यूशन का क्या महत्व है इस बात को स्वयं आइंस्टीन स्वीकार करते हैं। और आप एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, मैं आपको फाइनमेंट का एक अच्छा वेद से मिला, वेद से ब्राह्मण ग्रंथों से मिला। और इस पर तो अच्छा, एक मिनट आप सुनिए, मैं सबसे पूछूंगा, पहले सुन लीजिए। जब चर्चा हो रही है उस दौरान किसी को ताली नहीं बजानी चाहिए, किसी को भी नहीं बजाना। जो चर्चा हो हाँ, ताली नहीं बजाए, कृपया ताली नहीं बजाए। दोनों स्पीकर को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इनका भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है रखना चाहिए। हम भी इनको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए आप, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, पहले मैथ में बता दीजिए तब। इसीलिए देखिए गोष्ठी में इसीलिए हम नहीं चाहते इसमें लड़ाई आपस में मारपीट करने तो क्यों लड़ाई झगड़ा होगा? सुनिए, मैंने आपके 3 सेशन, इतने सेशन सुने, आपसे भी प्रश्न किया, झगड़ा तो नहीं रहा। माननीय नागरिक साहब को पूछिए, सुप्रिया काजी से मैंने पूछा, झगड़ा तो नहीं किया हमने। हम भी आपसे झगड़ा नहीं करते, तो झगड़े तो आपसे झगड़ा 4 गुना जब कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट से तो हम लोग चले जाएंगे वहां से सर, हम लोग नहीं मानेंगे। आप जरूरी नहीं है आप आज माने। गैलीलियो ने जिस समय कहा था उसमें पोप ने कहा था हम इसको नहीं मानते, और आज गैलीलियो के पोप के वंशज मान रहे हैं गैलीलियो सही था। आज आप साइंस जगत के पोप मत बनिए, मेरा निवेदन है।
आपकी भावी पीढ़ी मानेगी जो मैं कह रहा हूँ। आज नहीं मानेगा, 50 साल बाद मानेंगे, और मानना पड़ेगा। प्रकाश के वेग से कोई चीज 4 गुना बह रही है, आज तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं देखा गया। तो नहीं हुआ ना, मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ, आगे हो जाएगा। नहीं तो आप कहें सर भाषण दें, हम चले जाए, हमारे मानता नहीं है। अच्छा, मैं माननीय नार्लिकर साहब से निवेदन करूंगा कि यह ठीक है कि आज आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके पास साधन नहीं है। आप गणित का लाओ, चलो चलो गणित का लाओ। स्ट्रिंग के बारे में आप कोई बता सकते हैं मुझे? स्ट्रिंग के बारे में बता सकते हैं? स्ट्रिंग को आप नहीं मानते। आपने कहा था मुझे फोन पर, जब मैंने कहा एक्सपेरिमेंट की बात की, तो आपने कहा था स्ट्रिंग थ्योरिस्ट का गैंग है, ये आपके शब्द थे फोन पर। मैंने कहा ये भाषा ठीक नहीं है। फिर मैंने कह दिया बिग बैंग मॉडल वालों का और बड़ा गैंग है। तो साइंस में भी तो टकराव है, लेकिन टकराव सहन करना चाहिए। सुन तो लीजिए, कोई भी वेग जब आप कहेंगे 3-4 गुना नहीं, स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग की चौड़ाई बता सकते हैं आप? स्ट्रिंग की चौड़ाई बता सकते हैं? हाँ। वो मेरी पुस्तक में देखिएगा, मेरी पुस्तक है 2800 पेज की थ्योरी है, मैं तो ये समरी सुना रहा हूँ, 2800 पेज की थ्योरी है। अरे मलिक साहब आप सुन लीजिए, मलिक साहब चलो सुन लीजिए, आप हम सुनना चाहते हैं। सुनिए, ऐसा नहीं, सुनिए आप, सुने आप। हाँ सुनिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। हाँ हम जा रहे हैं। आप इसको जो है ना, ये पूरा हो रहा है ना, इसमें आपको वो कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे उसको कभी। अरे सुनिए, हमने बड़ा सम्मान के साथ उनको बुलाया है। सुनिए मलिक साहब, ये सब इसमें हो रहा है। और मलिक साहब हम ही बुलाए हैं उनको, हम ही उनसे निवेदन किए, सब हमने फैसिलिटी दी उनको, ठीक है। सब हमने करवाया है यहाँ पर। उसके हम हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो कन्वीनर है, वो भी बैठे हुए हैं। तो इसकी शासन समीक्षा कर लेगी आप सब लोग मिलकर के, बड़े स्तर पे जब भी हो जाएगी। सुनिए हमारी बात, सुनिए आप, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा। हमको जब भी आप कहेंगे कि प्रकाश के वेग से कोई चीज 4 गुना जा रही है, इतना हमारे लिए काफी है। हम उठ के चले जाएंगे वहाँ से, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं। अच्छा, हमारे लिए काफी है, हम उसके बाद नहीं सुनेंगे, उसके बाद जो भी बोलेंगे हम नहीं सुनेंगे। अच्छा मलिक साहब आपके प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं दिया, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिए अब तक जितने किए। सर यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने थोड़ा प्रश्न उत्तर तो होंगे। हमारा अधिकार है कि किसी चीज से हम सहमत नहीं है तो हम उठ के चले जाएंगे वहाँ से, आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। आप भी पूर्ण नहीं है ऐसा मान के हम नहीं सुनेंगे, कोई नहीं है, लेकिन ऐसा सुनेंगे नहीं, हम चले जाएंगे। आप प्लीज एक क्वेश्चन, जो द्रव्य को ऊर्जा में बदलने का समीकरण किया गया है, तो उसमें से भी तो प्रकाश के 3-4 गुने वेग के बराबर। कौन कहा है? कौन कहा है? नहीं, ये गलत। आप में से कौन इतना और चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाएं? हाँ सब बढ़ाइए आप, समाप्त करें। सभी चाहते हैं। विद्यार्थियों से पूछना चाहूंगा, विद्यार्थियों से क्या विदेशी साइंटिस्ट कहेंगे जब आप मानेंगे? नहीं। दो विदेशी साइंटिस्ट मेरी थ्योरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये भी बता दूं मैं आपको, एक नासा से, एक ऑस्ट्रेलिया से। और मैंने कहा था कि अप्रैल में घोषित करूंगा, उसके बाद सुन लेना। माननीय नार्लिकर साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, मैं जानता हूं, उनका नाम बहुत पहले से सुना है। आप शांति से सुनना, मैंने नियम यह भी होता है, मैंने वहां भी किसी भी वैज्ञानिक से बीच में प्रश्न नहीं किया था, और सुप्रिया कार्ड जी से तो मैंने बाद में किया था, अंत में। इन्होंने कहा मेरे गुरुजी हैं, बाद में एकांत में बात की थी। जी 1 मिनट, प्रोफेसर नार्लिकर है, और नार्लिकर साहब सिर्फ भारत में नहीं और वो अकेले नहीं, वो 2 पीढ़ियों से जाने जाते हैं पूरे दुनिया में। तो उनके सामने तो हम लोग आते नहीं, इसलिए मेरा निवेदन था नार्लिकर साहब से कि सभा को किस तरह से मतलब चलाया जाए, प्रोफेसर नार्लिकर ही बता दें, क्योंकि जो लोग साइंस करते हैं
हम जो ये कपड़ा पहन के आए हैं, ऐसा नहीं है कि जब हम स्कूल में चले थे वहाँ से सिर्फ यहाँ आ गए हैं। बीच में बहुत सारे चीज हुआ है, उसके बाद बहुत सारे सोच हुआ है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। और आपको पता है कि गैलीलियो गैलीलाई बोलकर एक आदमी थे, उनका नौबत मतलब उनको क्या मिला था, क्योंकि वो चार्ट के खिलाफ थे। ये सब चीज को याद रखते हुए साइंस को कैसे कंडक्ट किया जाए, कोई चीज को मतलब जब डिस्कशन हो रहा है, तो इससे प्रोफेसर नार्लिकर के अलावा यहाँ पे कोई है नहीं जो इसको बता सकते हैं कैसे होना चाहिए। तो मैं इनसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि ये हमें बता दे ये सभा को कैसे कंडक्ट किया जाए। पकड़ना पड़ेगा। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है। मैं यहाँ एक न्यायाधीश की हैसियत से नहीं यहाँ खड़ा हूँ, बल्कि हम सभी लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये सृष्टि के जो मिस्ट्रीज हैं, ये सृष्टि के जो ऐसे अनुत्तरित प्रश्न हैं, उनको जानने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि हमें सब कुछ मालूम है, या मुझे मालूम है तो तुम्हारी गलती है, ऐसी भावना यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब मुझे हर वक्त ऐसा प्रश्न आता है कि मॉडर्न साइंस जिसको बोलते हैं, उसके पास अभी सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं है, वो साइंटिस्ट भी मान लेंगे। लेकिन जिन प्रश्नों के उत्तर मालूम नहीं है, उनमें से अगर कोई प्रश्न सुलझ जाए, उसके जवाब मालूम हो जाए, तो वो एक बड़ी क्या कहते हैं उपलब्धि होती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ, उनके अगर आपके पास उत्तर हैं तो आप बता सकते हैं, और उन उत्तरों से हमको पता चलेगा कि आपकी जो जानकारी है उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है मॉडर्न साइंस के मुकाबले में, आप कहाँ पर हैं। तो एक प्रश्न ऐसा है कि जिसको कोई भी वैज्ञानिक यहाँ होगा वो पहचान लेगा, उसके लिए आप 3 फंडामेंटल कांस्टेंट ले सकते हैं। एक ई है, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है। H क्रॉस है, वो प्लैंक का कांस्टेंट बोला जाता है। और C है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसके बारे में अभी आप कुछ वो चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था या तो E स्क्वायर डिवाइडेड बाय H क्रॉस C, E का स्क्वायर बनाए, वर्ग कीजिए और उसको C और H से डिवाइड करिए, तो उत्तर आता है 1/137, 1/133। तो ये क्यों है, इसको कोई अब तक बता नहीं सका। और इसका अगर आपके पास जवाब हो जो कि लोगों को आप समझा सकें, तो ज़रूर ये दिखा देगा कि आपका जो मार्ग है वो सही रास्ते पर है या ऐसे रास्ते पर है हमें कुछ नई बातें सिखा सकता है। तो ये एक उदाहरण है। और दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि फोटोन से हमको सब जानकारी मिलती है, लाइट से, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये पता चल गया है कि गुरुत्वाकर्षण की जो लहरें होती हैं
वो फोटोन से नहीं चलती, उसके लिए कुछ और मेथड होने चाहिए। तो वो लहरें अब हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं, उसके लिए नोबेल पारितोषिक भी दिया गया। तो ये सवाल है कि ऐसी लहरों को आप कैसे पहचानते हैं, कैसे आप उसका इंटरप्रिटेशन कर सकेंगे। तो ऐसे दो सवाल हैं, और जब भी इस तरह की चर्चा होती है तो हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि कौन से मार्ग से हमें सही रास्ता बनता है, इसको हम ओपन रखें। ये नहीं कि मुझे ही सब मालूम नहीं, आपके बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं मुझे सब कुछ मालूम है ऐसी बात नहीं है, मैं भी उसको जानने के लिए उत्सुक हूँ। तो ये मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं। ठीक है, तो इस विषय में आपका नहीं। अभी जैसे आपने पूछा, इसको पूरा सुनने के पश्चात कोई भी अपना पेपर लिख के लाते हैं, थ्योरी लाता है, इसके आधार पर बहुत सारी प्रॉब्लम, आपने 2 प्रॉब्लम बताई है, ग्रेविटेशनल वेव की और वो दूसरी, ऐसी और सारी प्रॉब्लम आप दें। उस समय मैं अपने ग्रंथ का अध्ययन करके उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। अभी जो स्पेस का आ रहा है वो आप सुनेंगे, स्पेस क्या है, कैसे कर्व होता है, कैसे डिस्टॉर्ट होता है, तो स्पेस का स्ट्रक्चर वगैरह, मास एनर्जी कैसे एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती है, ये विषय आ रहे हैं। इस विषय से हटके और मैं तुरंत ग्रंथ का अध्ययन करके बोलूं, वो एक संभव नहीं है। इससे हटके उसके आधार पर अभी मैं पढ़ करके, एक नहीं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, करूंगा अभी 10 एक बहुत कठिन प्रश्न हो थ्योरेटिकल, आप मुझे लिख के दें, 1-2 महीना में लूंगा अपनी पुस्तक को पढ़ के। बहुत बड़े ग्रंथ है, अभी तो विमोचन भी नहीं हुआ, आज विमोचन कराना था, मंत्री जाने वाले थे। उसके बाद मैं उसमें से देख करके आपका समाधान करने का प्रयास करूंगा। अब जो है, जितना है उसको सुनना चाहिए, क्योंकि एक बार उसका बेसिक समझ में आए। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रश्न करे और इलेक्ट्रॉन का पता नहीं हो, पहले बेसिक यहाँ छात्र समझ ले, उसके बाद ये प्रश्न भी आएंगे मेरे ध्यान में है कि पहला तो ध्यान नहीं था, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव का मुझे अवश्य ध्यान है। और भी ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों के, तो मैं चाहूंगा मुझे लिख के दे दें और मेरे से संपर्क करें। उसमें समय लगेगा, मुझे अपने ग्रंथ को देखूंगा, उस पर विचारूंगा, उसमें नहीं तो और ग्रंथों को देखूंगा। अभी ये जो चल रहा है स्पेस का, एक बार स्पेस को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आप सभी सुनने के मूड में हैं, हाँ, ये सुनने के मूड में है तो नहीं, विद्यार्थियों से पूछूंगा यार, विद्यार्थियों से, बीएचए के विद्यार्थी एक हाथ खड़े कर रहे हैं, बहुत खड़े। चलिए, माननीय नालिकर साहब से अनुमति लेके मैं स्पेस का प्रारंभ करता हूं। What is space? Is space some real or imaginary thing? What is its role in the universe? Scientists consider and show space like a sheet or net, but nobody knows what reality its structure is. What is the mechanism of its formation? Is space is a real thing which bends by massive objects in which ripples are produced and which expand and distort? What are its contents? Why does space interact with massive and charged objects? What is the relation between space and mass or charge? Is there availability of mass and charge in space? We talk of space-time singularity, but what is the relation between space and time, and why? If space is an imaginary thing, then its expansion, distortion, bending, and singularity also should be imaginary. Then how can we understand the real world by imaginary
things. Feynman also had doubts about this, as he said, in the first place, what do you mean by time and space? It turns out that these philosophical questions have to be analyzed very carefully in physics, and this is not so easy to do. हमारे स्पेस को आकाश कहते हैं. Space is a mixture of some special types of prana and some rasmi. It contains of following rasmi. पश्यन्ति ओम, सूत्रात्मा वायु, भुवय रश्मि, प्राण, अपान, उदान, दैवी वृत्ति, दैवी दृष्टि, याजश्री वृत्ति, याजश्री दृष्टि. Unit of space. इसको ये रखिए. Unit of space. Property of these rasmi, which are contents of space. Pashyantyom. These rasmi bind and enforce all other rasmi. Sutratma. These rasmi stitch all other rasmi like a net except Om rasmi. Bhuva. These rasmi help in keeping gap among different type of rasmi. Space will be contained in absence of these rasmi. This is what it is. Pair of prana and apan rasmi. These rasmi provide suitable path to particle and quanta in space. Daivi understood. These rasmi provide force to all other rasmi of space and particles or quanta which travel through space. Agla pair, Daivi Yajshri Pankti. These rasmi help in traveling of the particles and quanta by creating friction force among them. With Sutratma Vayu, these rasmi also play roles in distortion, curvatures, actually condensation and rareness of space. Pair of prana and udan. This pair of rasmi removes the interruption produced by the minor friction between particle or quanta and Devi Yajshri Pankti rasmi and give them repulsive force by pushing them. By these particles and photons move freely in space. Devi Yajshri. The rasmi provide the base or path in friction and combination of various particles and quanta with Pankti rasmi. It can be assumed that it is responsible to provide them a path. Along with this, the rasmi help in the formation of particles, quanta and various other objects by combining with the Rdic rasmi. In this process, Rdic rasmi get intense force from the rasmi. Daivi Yajshri. With Sutratma Vayu, Daivi Yajshri. With Sutratma Vayu, the rasmi play a vital role in providing shape to the particles, quanta and various other objects. A pair of surrounding rasmi. Each pair, a pair is surrounding rasmi. Photon. Prana and apan keeps vibrating in front of every photon. Space. 3D space made of these subtle units of space. How does photon or particle travel in space? Space similar to a 3D net made by various units. These units are interconnected by Sutratma Vayu rasmi. They constantly rotate on their axis. Its mutual bonds are very loose, due to which any wave or particle can easily pass through it. Space acts as a road to move waves or particles. Some of its inbuilt rasmi provide base for any particles and waves, while some other rasmi provide some friction to those waves and particles, as the road provides friction force when walking on the road.
as the force generated in response to the fixed frictional force of the rod provides the force to move the wheel of the car. In the same way, some Rashmis give the reaction force to move the particle in wave while moving in space. Thus, a particle in waves passes freely through the space. While moving, some Rashmis of space provide path by making some diversion in units of space to move wave and particle. We have mentioned above these Rashmis. We will further resolve the problems of space curvature, distortion, etc. Curvature, distortion के विषय में आगे बताएंगे. Summary: Modern science is almost unaware about the structure of space. Vedic physics explains the structure of space very clearly in comprehensive manner. Space is a real entity which is produced by special combination of Vedic Chandrashmi. Its all units keep rotating on their axis. It acts as a rod for moving various waves. Its all units are interconnected by the net of Sutratma Vayu Rashmi, but very loosely. Net of these units can bend, distort, condense by interacting with other Vedic Chandrashmi. Next, the structure of elementary particles and process of the formation. Elementary particle along with photon, Vayu, so-called vacuum energy. What is vacuum energy? Group of Rashmis larger than Rashmis of space or larger than Yalshi Prishto is called Vayu. So-called vacuum energy is the form of this Vayu. The Rashmis always move everywhere in space. Vacuum and Madhyama sound waves are produced at the time of creation of these Rashmis. All types of fields or force are created from Vayu. 1 unit of Vayu contains 60 Chand and 60 Pran Rashmi. All elementary particles in quanta will be formed by condensation of Vayu. Agni. Agni is the condensed form of Vayu. All elementary particles in quanta are the form of Agni. Quanta has 360 Pran and Chandrashmi. Elementary particles has more than 360 and less than 480 Pran and Chandrashmi. Properties of quanta and elementary particles. The smallest unit of Agni, which is 8 properties, that is attraction, repulsion, holding, power, penetration, light, heat, speed, shape, is called elementary particle or quanta. There are 300 types of particle of visible matter in the universe. Formation of particle and photon. The combination of Pran upon Vyam, Udan Saman and Dhananjay covered by Sutratma Vayu. Due to this, the spring begins like whirlpool start in sea. In this combination everywhere. After this, some Chandrashmis also begin to combine with those Pran Rashmi as shown further. Gayatri and Prishto Rashmi enforce these spins. In the state, two states. First state, there is absence of rotational motion. The second state, rotational motion has begun somewhere. With the rotational motion, triplets of Chandrashmi begin to generate. Then a new form is created after merging of two triplets. After that, by merging, 3 triplets start rotating and take condensed form. Nivit mass Rashmis from one side and Gayatri Chandrashmi from other side attack on that condensed form of Chandrashmi. From this attack, Gayatri Rashmi convert into Trishtuk and Bharati Chandrashmi. Then the condensed form of Chandrashmi, that is photon or particle under construction, takes place in the middle part of those Chandrashmi. After that, these Bharati and Trishtuk Chandrashmi
push back that under construction photon particle and are converted themselves into Jagati Chandrasmis. Hence, the construction process of that photon or particle completes. The photon gets high speed through a combination of Dhananjaya Rasmi, Vishwuttatma Vayu and two other Nivedha Rasmi. What is the structure of particle and quanta? What is the structure of photon elementary particle? If they are created from energy, then how can we say them elementary? Rdic view. Center of particles consist of Divya Vayu, mixture of various type of prana and Chandra Rasmi, Manastattva or Om Rasmi, that is vacuum energy. स्वामी जी Divya Vayu. सवाल था। ये हमारा नहीं, ये हमारे नहीं है, आपका बताया। मॉडर्न साइंस। आप इसको अभी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। हाँ। किसने बताया कि यहीं पे कंप्लीट है ये पिक्चर? इसमें ये कहाँ से आपको पता चला कि ये जो ग्रुप आप दिखा रहे हैं 6 पार्टिकल्स हैं, 6 में ही कंप्लीट है ये? नहीं, ये हमारा नहीं है, आपका है। हाँ, मेरा सब तो नहीं, कभी नहीं कहे हैं ये 6 ही है, बस उसके आगे नहीं है। केवल उदाहरण बताया है और एग्जाम्पल से पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये 6 जो दिखा रहे हैं 9 नहीं है, कोई आपको नहीं कह रहा है। What? ये 6 क्यों है? 9 हो सकता है, 900 हो सकता है। बार कितने हैं? आज के तारीख में हाँ। जितना हमें ज्ञान है वो है, इतना है। उसके आगे है कि नहीं, हम यहाँ खड़े होके नहीं कह सकते हैं। ये तो मैं भी नहीं करा, मैं भी नहीं करा, ये नहीं है। ला रहे हैं कहाँ से? ये आपका फिगर बताया है कि आप फिगर 6 है, इतना तक हमें समझ में आया है। तो ये एग्जाम्पल ही तो है, ये एग्जाम्पल है। इतना तक हमें समझ में आया है अभी तक। हाँ। इसके आगे क्या होगा, जब तक मशीन नहीं होगा हमारे पास, हम नहीं बता सकते हैं। तो हम भी नहीं करें कि आप यही हैं, अभी तो यही है ना, हम भी नहीं करें, आगे रिसर्च नहीं होगा। हमने कह रहे हैं कि वेद में कहा है 6 ही है। ये वेद का नहीं है, ये वेद का नहीं है। वैदिक एग्जाम्पल आपकी किस? पहले प्रश्न है, अब आगे वैदिक व्यू आएगा, बाकी व्यू आगे देखो। ये वैदिक व्यू कब आएगा? ये आपका नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये आपका है। एक एग्जाम्पल आपका दिया है। स्वामी जी आप हिंदी में बोलिए ना, जब सभी समझ रहे हैं। हाँ बस हिंदी बोलिए। लिखा अंग्रेजी में, चलिए जितना हिंदी में। ये जो टर्म्स, इसमें जो लफ्ज है, ये लफ्ज का एक ये होता है, भार होता है। उसका अगर अंग्रेजी में रखे तो गलत फहमी इतना ज्यादा नहीं होगा। सेंटर ऑफ पार्टिकल्स। कोई भाषा से नफरत है, पर जिस भाषा में इसको लोग आविष्कार किए थे, उनका जो लिमिटेशन है वो कम से कम तो पता चले। इतना सा है कि जो आविष्कार जिसको हम कह रहे हैं ना, ये चीजें हमारे वेदों में पहले से है। स्वामी जी का नहीं, आपका नहीं, मेरा नहीं, जितने सारे लोग बैठे हुए हैं सभी का है। सभी का गांगुली जी, महाराज सभी का बहुत धन्यवाद। सभी का ही है, सभी का, सभी का, सभी का, बिल्कुल सभी का। ये हमारा परंपरा है। हाँ। First layer outside the center consists of 10 primary pranarasmi. Second layer is various type of chandrasmi, especially Rdic chandrasmi in condensed state. Third layer is of chandrasmi present in the photons but absent in the particles. Fourth layer is of Manastattva Om Rasmi and Suttatma Vayu. Internal structure of photons. क्या है वो किस मंत्र में है? उसके साथ बहुत अच्छा होगा। उसके लिए हाँ, वो ठीक बात है आपकी। मैं ये अपना लेक्चर साइंटिस्टों की दृष्टि से रखा है, इसलिए कहीं कोई प्रमाण नहीं है। ये यात्रा ब्राह्मण के आधार पर है और सर
68 ऋषियों के ग्रंथ है इसमें, 4 वेद के अतिरिक्त 68 ग्रंथों का उपयोग किया है। पहले कहते हैं महर्षि ब्रह्मा जी से लेकर दयानंद पर्यंत सारे ग्रंथ, और साइंस की भी लगभग 30 पुस्तकों को मैंने पढ़ा, फिजिक्स की पुस्तकों को। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फोटोन, look on screen. There is similarity in structure of element, the particle, quanta and star. That middle part continuously slips opposite to the central part at different speed. The transition region is also continuously in motion between these two parts. Summary: Vedic science gives a name Vayu to a mixture of Vedic Chand and Pranasmi, and that Vayu thought is nothing else but so-called vacuum energy. Pran and Chandrasmi produce fundamental particles and photons by getting condensed. With this, the process of work will start everywhere in the vacuum energy. In the circulation, some Chand and Pranasmi get together and become dense, hence photons and fundamental particles begin to appear. There is very little difference between these two structures. Each photon and fundamental particle keeps rotating on their axis. Their central part keeps on rotating separately. Review of cosmological Rdic and CMB. Please, पानी रेड शिफ्ट का कारण, बिग बैंग के 2 मूल कारण हैं। ऑब्जर्वेशन हुआ रेड शिफ्ट और CMB। जैसा मैंने माननीय नार्लिकर साहब को पूछा था कि इसका और भी कारण हो सकते हैं स्पेस एक्सपेंशन नहीं होकर के, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, इस पर काम होना चाहिए। तो मैं वैदिक भी बता रहा, रेड शिफ्ट का कारण और क्या हो सकता है। Now I want to discuss those reasons why which scientists are in misconception regarding Big Bang. Scientists' view. Please look on the screen. These scientists believe that expansion of space itself by dark energy is the cause of moving galaxies apart. For this reason, they also consider space of the wavelength of photon along with the space. Regarding this, I have some problems. Is waves attached with space? If yes, then wave will not have its own speed, but it will travel with the speed of space, which will be Hubble speed in present time. At the time of Big Bang, all energy will travel with space. Then, how can energy be condensed to form the celestial bodies? My further question is, are all celestial bodies and particles also attached with space? If yes, then they will never combine with one another. In this figure, cars cannot meet with stretch in the road. They will travel with the speed of space only. If wave isn't attached with space, then what is the cause of redshift? They would like to know from supporters of space expansion that expansion of space can only affect wave, not molecules, atoms, etc. Why? Here scientists will say that the strong force of atomic level prevents the atom from spreading. I would like to know that intense explosive force which has ability to expand the space and can explode in infinite dense point, but can't explode or spread the atom. In this regard, someone may say that initially the force was the other type and very strong. Later, it converted into weak force. They may also say that the inflation of space begins first and then expansion. Why expansion of space can only affect galaxies and not the stars, planets, satellites? On this topic, the doubt of Steven Weinberg is. Please look at the screen.
these ideas, doubts of scientists are clear. In fact, expansion of space is a major problem of modern physics. About this topic, the authors of Discovery Cosmic Factors write, in 1995, at the Conference of Key Problems in Astronomy and Astrophysics held at the Canary Islands, Alan Standage presented the list of 23 astronomy problems for the next 3 decades in the form analogous of Hilbert's famous 23 famous problems in mathematics. The first problem in cosmology was, is the expansion real? We should also consider the other reason of redshift due to complex problem of space expansion. Some scientists have approached in this direction too. The ideas are as follows. Side light. On this topic, Edward Harrison states, please look at it on a screen. It is obvious that the energy of electromagnetic waves starts losing after a long time during its long journey. In fact, their energy frequency starts decreasing. This reduced energy becomes the cause of redshift. Scientists who support expansion of the universe object against this hypothesis. Yes, on this topic of starlight, Edward Harrison has written an objection in his book Cosmology. We'll look screen. It means that there is a problem in accepting the idea of starlight that it does not have the stability of entropy. That is where does the lost energy due to radiations go. They don't have answer who advocates the concept of starlight. Supporters of starlight have its solution or not, but we are giving the solution here. Vedic views. Starlight, problem and solution. In our view, not only the photon but every so-called fundamental particles such as quarks, lepton, etc. are not eternal and they will not exist forever. We will further discuss this. The energy of so-called elementary particles known by the modern science originate from different prana and chandrasmi and they merge in the same when the time comes. Leakage of prana, marut, rasmi from photon made by Sutratma Vayu. The energy lost from starlight is converted into the same prana and chandrasmi known as the vacuum energy by modern science. For this reason, the objection of entropy remaining constant is meaningless to the principle of starlight. Different observation and experiments of modern science are limited to the minutest elements known by modern technology. That is electromagnetic waves and elementary particles known not beyond that. The structure of photon is described earlier. Other reasons may be as following. Spin and orbital motion of planets and stars. The spin of each galaxy and the orbital motion around the vast galactic center. Due to this, somewhere Doppler and somewhere gravitational component effect can be observed. Age of galaxy and circumstances at the time of emission of light from those galaxies. Vayu, that is vacuum energy, is a mixture of hundreds types of sun and pranasmi, which will surely affect photons made from pran and sanrasmi. According to Vedic view, 17 special type of region exist around the center of each galaxy and star. There is abundance of various types of Vedic rasmi and other waves and particles in them, in which the rays of light can be weakened after passing through them. 10 region around galactic center or star.
Next region, 70 region. The detailed description of these three diagrams is given by book Rdic Alok. According to the Vedic view, some Rasmis exist on the outer boundary of various solar systems and galaxies, which are similar to the waves of water along with minute surface tension. While penetrating within this region, the energy of electromagnetic wave can decrease to some extent. This boundary or layer is also found around every galaxy. For reasons mentioned above, the scientists should seriously consider the causes of Rdic. I am of the view that most of modern cosmologists in this regard are in illusion. Cosmic microwave background radiation. Another reason of the illusion of expansion of the universe is that scientists have discovered CMB radiation in the universe. The temperature of this radiation is considered to be 2.73 Kelvin. Here scientists believe that. Please look on the screen. On this topic, I want to raise some questions. CMB radiation, which was released before 13 billion years, then how can it be received by us now while the universe is expanding with an accelerated rate? If this radiation is continuously received by us, that its temperature cannot be saved in everywhere. Thus, there can be other regions of this radiation, such as vacuum energy, dark energy, or some new kind of wave, which are unknown. It is most logical to have the temperature of any energy that is filled in space everywhere, like vacuum energy, about which we have discussed earlier. Summary. Increase in the wavelength of the photon by space expansion is bigger confusion than concept of space expansion. There will be Doppler effect due to the spin and orbital motion of the various galaxies and of the Earth. The waves of light coming from far off region will be affected due to passing through many gravitational field regions. In absence of knowledge of the internal structure of photons, modern scientists are not aware about leakage of certain Rashmi. All 17 special type of regions around stars and galactic center, probably modern science do not know about that, can also be region of the redshift. Some Chandrashmis present on the boundary of each solar system and galaxy will also affect EM waves. There are hundreds of minor fields, that is Chandrashmi, present in the vacuum energy according to Vedic views. They will also affect the frequency of light, as these photons are also made up of Chandrashmi. CMB is not just the form of initial radiation. CMB is not just the form of initial radiation, but 2.7 Kelvin temperature is only of vacuum energy, which is produced not only on one place but everywhere, due to which this temperature is found same everywhere. A big bang with illusion due to both redshift and CMB is completely illusion. पाँच बजे हॉल बंद करना है ऐसा। हाँ सर, वो इसीलिए आप देख लीजिए, वो उनका भी schedule है 2 hours time, so we'll be given you 2 hours time. Starting, I think we have started 2:20. So we'll you have to summarize. ये नहीं बोलेंगे। अच्छा, so that
अच्छा, so then up to 440 actual time, but it can continue up to 5. तो हम लोग पहले तो सब लोग तो डिस्कशन कर ही रहे हैं, 5 बजे के 5 मिनट पहले बंद करेंगे। 15 मिनट शंका कोई प्रश्न के लिए भी रखेंगे, पौने 5 बजे से। ओके, थैंक यू। ऐसे तो सभी लोग आपको पूछ ही रहे हैं, पहले डिस्कशन भी एक तरीका से हो ही रहा है। ओके, अब ये ठीक है। ग्रेविटॉन, how do graviton or other mediator particle form? What is their structure? Graviton का structure. It is a less condensed form of Rashmi as compared to other mediator particles. It is a condensed form of Trishtup Rashmi. Prakat Pankti and Brahati Rashmi is compressed with the help of Sutras Vayu Om Mass and Rashmi. Compressed Pankti and Brahati Rashmi create condensed Trishtup, that is graviton. Pankti and Brahati Chandrashmi continuously emit from all mass-bearing objects. Graviton is produced from Pankti and Brahati Rashmi. इसका मैकेनिज्म बड़ा है, लेकिन जैसा कि शंका स्नान के लिए समय रखना है, इसलिए इसके विषय में हम संक्षिप्त कर रहे हैं। पूरा प्रस्तुत कर दीजिए, एक राय होनी चाहिए। पंक्ति एंड ब्रैती छंद रश्मि आर कंटिन्यूअसली emitted and absorbed. Compressed crystal plant is called graviton. Now graviton attracts Pankti and Brahati Chandrashmi which are emitting from objects. Due to this space contracts and objects feel attraction force is nothing but gravitational force. Gravitational force is produced from Pankti and Brahati Chandrashmi. Why gravitational force is weakest force? Some originated graviton is scattered into different directions due to attraction. This Pankti and Brahati Rashmi present everywhere, excluding the region between two objects. Additionally, there is a weak interaction between Brahati and Pankti Chand Rashmi. As a result of this, gravitational force becomes weakest force. Unified force, I leave this mass, electric charge, इसको समय की कमी से नहीं बता पा रहा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, मास क्या है, mechanism of transformation of mass into energy. What is energy and how does it originate? How does mass originate from energy and what is its mechanism? We know Albert Einstein's famous mass energy relation E equal to mc square, but nobody knows about the mechanism of this process. No one knows what exactly energy is. Feynman also accepts it. It is important to realize that in physics today we have no knowledge of what energy is. Basically, मास एनर्जी कंजर्वेशन का मैकेनिज्म ये बताऊं, आगे चलूं? बताइए सर, बच्चे भी सुनेंगे, मैंने 2-4 चीज बता दी। ये काम का है। Because the quantity of content is same in matter and antimatter, only their nature differs. They attract each other very strongly and merge completely. Other waves present in vacuum energy are very violent in nature. The combination of prana and marg is attacked and covered by Khadir waves. After this attack and covering, the combination takes the form of photon.
ये मैकेनिज्म ये बताने वाले थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्या मैकेनिज्म है ये बताने वाले थे, लेकिन समय के कारण इनको छोड़ रहे हैं। इनके पास मैंने ये टॉपिक इनके लिए छोड़ दिया। क्या अटैक होते क्यों, उसका मैकेनिज्म क्या है, केवल यहाँ ये बताना है कि in this process attraction force becomes so strong that both of particles mix together. Prana and Marurasmi present in these particles mixed together as shown in figure. In this process of this mixing, the Khadir Rasmi present in vacuum energy attack on the mixer and cover it from all direction as shown below. After this, Marut and Rasmis are converted into two photons. However, the entire mechanism of attraction force is subject of separate seminar. Vedic science explained very precisely and in great detail, which can be seen in my book where we can arrow. While moving in space, some prana and Marut Rasmi leak from each photon, although the crystal Rasmi is present in photon, conserve the energy of photon by combining with the Sutratma Vayu. However, some Rasmi leak. This is the reason that the energy of photon decreases in some quantity during the long period of time. This should be one of the reasons of tired light. Photon-photon interaction. Next, summary. Gravitational force is actually force, not just space curvature. The reason for the space curvature of bending is gravity. There are 8 types of subtle raspings in graviton. Some of the raspings emitted from any object having mass condensed together with raspings emitted from another object and generate gravitons. Because of the weakening of binding force between these raspings and leakage of gravitons in the space here and there, this force becomes weaker than other forces. Weak gravitational force also works between photon-photon and photon-electron interaction. With the combination of some prana and chandrasmi, there arises opposition in the position and motion that is called mass. With the combination of particles and antiparticles, prana and chandrasmi, existing in both particles and particles combined together and with the impact of some special rasmi existing in vacuum energy convert into photons. Thus, unresolved problems of quantum gravity, space bending, mechanism of conversion of mass energy and mass, etc. of modern science are resolved by Vedic science. Wherever the mass energy conservation appear to be violated in the universe, they dissolve into prana and chandrasmi. Because some rasmis are same in both massive object and space, there is a few mass in space. There is few mass in space. This is the cause of interaction between space and the massive objects. Charge properties are also present in space because of some rasmis which are same in all types of charged objects and space. स्पेस कर्वेचर को समय के कारण, समय की कमी से छोड़ रहे हैं। स्पेस कर्व कैसे होता है? और क्रिएशन प्रोसेस इन फेज मैटर। कंक्लूजन पर आते हैं, फिर कुछ वो आएगा समझ आता है। कंक्लूजन को हिंदी में भी बता दूंगा, थोड़ा सा है। The whole universe is the result of perturbation caused by Om Rasmi sound waves in the base matter प्रकृति। संपूर्ण यूनिवर्स प्रकृति में ओम रश्मि के द्वारा स्पंदन का परिणाम है। In the future, when technology is developed, scientists will be able to get the cognition of rhymic Vedic mantra in questionly form, somewhere in Madhyama form, electric signal. It's my claim.
जब हमारे टेक्नोलॉजी विकसित होगी तो भविष्य में पश्चिम और मध्यमा के रूप में वेद मंत्रों की ध्वनियां वैज्ञानिकों को इस यूनिवर्स में सुनाई दे सकेंगी। These Vedic sound are buzzing in our body, elementary particles, photons, space and all the celestial body. हम सबके शरीरों में ब्रह्मांड के हर ऑब्जेक्ट में वेद मंत्र की पश्चिम की मध्यमा ध्वनि गूंज रही है। जब कभी टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी हम उनमें से उन ध्वनियों को सुन सकेंगे। Because of this text name Veda, the knowledge given by God not only for the people of earth but for all those intellectuals who live anywhere in the universe. This is the text combination of both spiritualism and physical science. जिसको वेद कहते हैं वो हिंदू का नहीं, इस पृथ्वी वालों का भी नहीं, ब्रह्मांड में जहां भी बुद्धिजीवी प्राणी रहता है उन सबका यही वेद है। और इसमें अध्यात्म और फिजिकल साइंस दोनों ही मूल रूप में विद्यमान है। नॉलेज एंड लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड इन द यूनिवर्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट। इस वेद से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में जहां भी प्राणी बुद्धिजीवी प्राणी रहता है साइंस और नॉलेज भाषा दोनों का विकास हुआ है। अब ऋषि मुनि the ancestors of the entire earthly inhabitants and their successor Indians have kept this great heritage safe in the form of a book so far. वेद ब्रह्मांड का, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो भाग संपूर्ण विश्व के पूर्वज हैं उन्होंने इस विशाल संपदा को, बौद्धिक संपदा को अब तक सुरक्षित रखा है। Together we should bring the world under the flag of Vedas and protecting this great intellectual wealth. इसलिए हम सबको मिलकर इस वेद के झंडे के नीचे आकर के इस महान बौद्धिक संपदा को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। Om is the primary, universal and ubiquitous sound of the universe. Om सबसे प्रथम सर्वव्यापक ध्वनि है। Modern physicists, especially Western scientists, have done very well in the last 4 to 500 years. It is very commendable. In this world, the whole world is standing with them, with their resources. पिछले 400 से 500 वर्षों में 400-500 वर्षों में साइंस ने बहुत ज्यादा विकास किया है, ये प्रशंसनीय है। लेकिन उनके साथ संपूर्ण विश्व भी संपूर्ण संसाधनों के साथ खड़ा रहा है और खड़ा है। Even then, modern physics is suffering from many serious and unsolved problems. फिर भी modern science बहुत सी गंभीर अनसुलझी समस्याओं से अभी भी ग्रस्त है। On the other hand, our Vedic science was the universal science till Mahabharata war. From the entire world, that is almost 5,000 years ago. उधर वैदिक विज्ञान महाभारत युद्ध अर्थात 5,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी का एकमात्र विज्ञान था, धर्म था। However, Bharat, India played an important role in giving a scientific perspective to the world. फिर भी भारत ने विश्व को बहुत 5,000 वर्षों में भी बहुत कुछ दिया है। After thousands of years, Maharishi Dayananda Saraswati, founder of Arya Samaj, gave some hints about this. हजारों वर्ष बाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस विद्या के कुछ संकेत दिए थे। Those hints have not been understood completely till now. लेकिन दुर्भाग्य से उन संकेतों को पूरी तरह अभी तक समझा नहीं गया। With the grace of God and little financial help of some followers of Maharishi Dayanand, I have made a lonely attempt to understand all those hints and the hidden science of Vedas with the strength of my intuition. ईश्वर की कृपा से और महर्षि दयानंद जी के अनुयायी कुछ आर्यों के आर्थिक सहयोग से मैं अकेला इस काम को मैंने किया है और उन छुपे संकेतों को खोजा है अंतर प्रज्ञा के द्वारा। There is no guide to me except God and text of ऋषि। मेरा ईश्वर
और ऋषियों के ग्रंथों के अलावा कोई मार्गदर्शक नहीं रहा है। For the past 2 years, my disciple Vishal Arya have kept the latest problems of modern physics in front of me and gave many suggestions in this field. मेरे शिष्य विशाल आर्य जो ड्यू से थ्योरेटिकल फिजिक्स में एमएससी हैं, नई नई जानकारी नेट से फिजिक्स की मुझे दी है और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। The technical work is the result of hard work and talent. जो टेक्निकल वर्क है ये विशाल आर्य की प्रतिभा और परिश्रम का परिणाम है। Translation of this research paper is done by Mr. राजाराम सोलंकी। वैसे इसमें डॉक्टर वेद प्रकाश जी आर्य ने भी काफी प्रदर्शन किए हैं। This theory will be seen to be completely new and imaginary to you. Think if no one knew about the modern cosmology or physics at all, then all of present theories will also seem imaginary, hypothetical and new. Some scientists consider string theory to be fictional. While questioning about validity of our theory, you should also consider our approximate 80 questions on fundamental aspects of modern physics. You can also argue that what physics is that? आप कहेंगे कैसा फिजिक्स है? या पहले बोला कि आपको ये मेरी थ्योरी कंप्लीटली काल्पनिक लगेगी, नहीं लगेगी। अब यहाँ जो बैठे जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ा है उनको फिजिक्स बताएं तो उनको वो फिजिक्स भी काल्पनिक और इमेजिनरी लगेगी। साइंटिस्टों को, बहुत से साइंटिस्टों को स्ट्रिंग थ्योरी में ये काल्पनिक ही लगती है, लेकिन फिर भी साइंस चल रहा है 60 वर्ष से स्ट्रिंग थ्योरी। और जो मेरे इस थ्योरी की वैधता पर प्रश्न कर सकते हैं, वे मेरे 80 प्रश्नों पर भी ध्यान रखें जो मैंने मॉडर्न साइंस के विषय में इस लेक्चर में पूछे हैं। You can also argue that what physics is this, which is without mathematics, experiment, and observation. In this regard, let me quote the views of many famous scientists in the modern era. आप कह सकते हैं कि ये कैसा साइंस है, कोई मैथ नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। मैं उसके लिए कुछ साइंटिस्टों को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइंस्टीन, most famous scientist, as far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain. As far as they are certain, they do not refer to reality. जो गणित के निश्चित नियम हैं, वो वास्तविकता को नहीं बताते, और जो वास्तविकता को बताते वो नियम निश्चित नहीं है, ये आइंस्टीन कहते हैं। फिर कहते हैं I don't believe in mathematics, आइंस्टीन का मेरा नहीं। दूसरे फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड वी फाइनमैन, some things that satisfy the rules of algebra can be interesting to the mathematician, even though they don't always represent a real situation. अब मैथ पढ़ते हैं, मैथ बहुत आता है, स्ट्रिंग थ्योरी मैथ पर है। रियलिटी क्या है? सबका अपना मैथ है। रियलिटी क्या है? ये ब्रह्मांड रियल है, इमेजिनरी नहीं है। ब्रह्मांड केवल मैथमेटिकल नहीं है। फाइनमैन ने यह भी लिखा। चलिए फिर लिखते हैं, फाइनमैन कहते हैं I love only nature and I hate mathematicians. तो मैं नहीं कह रहा, आधुनिक साइंस के बहुत बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं। फाइनमैन बर्नौली क्या कहते हैं? It would be better for the true physics if there were no mathematician on earth. अच्छा हो सही फिजिक्स जानने के लिए धरती पर मैथमेटिक्स नहीं हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे निवेदन करूँ, प्लीज डोंट बी पैनिक, इट्स नॉट माय व्यू। जब मेरा व्यू नहीं है इसलिए इससे आप परेशान ना हो। जो ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट नहीं है, उनके लिए फाइनमैन क्या कहते हैं? देयर आर theoretical physicists who imagine, deduce and guess at new laws, but do not experiment. And there are experimental physicists who experiment, imagine, deduce and guess. जो theoretical साइंटिस्ट होता है वो अनुमान लगाता है, कल्पना करता है, निगमन करता है, एक्सपेरिमेंट नहीं करता।
जो एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये अपेक्षा नहीं कीजिए मैं एक्सपेरिमेंट करूं। और आगे फिर आइंस्टीन कहते हैं ये थ्योरी कैन बी प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट बट नो पाथ लीड्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू बर्थ ऑफ ए थ्योरी। और आप में से बहुत से कहेंगे कि ये साइंस नहीं है, ये फिलोसफी है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है। उनके लिए मैं मैक्स बॉर्न को उद्धृत करूंगा। आई एम नाउ कन्विंस्ड दैट थ्योरेटिकल फिजिक्स इज एक्चुअल फिलोसफी। मैक्स बॉर्न कहते हैं कि थ्योरेटिकल फिजिक्स है वो वास्तव में फिलोसफी, थ्योरेटिकल फिजिक्स है वो वास्तव में फिलोसफी ही है। However, I accept the importance of mathematics, experiment and observation, but I also want to add that their inevitability is not appropriate everywhere and not beyond doubt, especially in the absence of true logic. एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और मैथ के पीछे अगर शुद्ध तर्क नहीं होगा तो तीनों ही गलत निष्कर्ष दे सकते हैं। I gave, please note, I gave a whole new theory today after thousands of years. Do you expect from me alone that I should also do experiment, observations and develop the required mathematics? If you find my theory logical, then I urge all you to try to do the possible experiment and observation on it and develop the appropriate mathematics for it. मैं एक थ्योरी संसार को आज पहली बार दे रहा हूँ। पहली बार फिजिक्स बनी जब कितनी विकसित थी, मैं पहली बार दे रहा हूँ। क्या आप मुझ अकेले से अपेक्षा करते हैं क्या मैं इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी करूं, ऑब्जर्वेशन भी करूं और इसके लिए मैथमेटिक्स का आविष्कार भी करूं? मैं एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट से, मैथमेटिक्स से आह्वान करता हूं वो आए और डिस्कशन मिलकर विचार करके इस पर एक्सपेरिमेंट भी करें। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं और इसका मैथ भी धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है। तत्काल सब कुछ नहीं होता है। I request you all to consider the universal Vedic science fairly and scientifically without any prejudice. If you have any question, I will welcome. You should also consider how many problems have been solved by me with the help of our Vedic physics. You can present the most difficult and unsolved actual problems. Not only you can present the most difficult and unsolved actual problems. Actual problems. आप पूछे बिग बैंग क्या हुआ, ये प्रॉब्लम नहीं है, हम मानते नहीं बिग बैंग। एक्चुअल प्रॉब्लम जो थ्योरेटिकल फिजिक्स की है, not only Vedic science but also modern theoretical physics. I will try to give their solution on the basis of my Vedic science in a required time period. तत्काल नहीं। You probably मैं इसमें कहा कि आप इस साइंस पर विचार करें, इस पर भी प्रश्न करें। मैंने आपकी कितनी समस्याओं का समाधान किया, इस पर भी विचार करें। थ्योरेटिकल फिजिक्स में भी कोई कठिन समस्या है, आप मुझे लिख सकते हैं। समय के साथ समय लेकर के उन पर विचार करके समाधान का प्रयास करूंगा। You probably do not believe in my claim. That is why I need to make. आप कहेंगे भारत के पास कुछ नहीं रहा, आप क्या दे सकते हैं? इसलिए that is why I need to make you aware of gratitude of some scientists towards Bharat. I believe that I can give you much more than that accepted by these scientists. Let's join our hand together. विरोध नहीं। I want let us join our hand together to move forward and make a world more happy and a better place to live with the help of wonderful Vedic physics. मैं आह्वान करता हूँ मॉडर्न और वैदिक हाथ मिलाएं, बढ़ करके आगे चले और संसार को शांति का मार्ग प्रदान करें, हमें रहने के लिए शांति और आनंद हो। भारत के विषय में आइंस्टीन लिखते हैं, when I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. You look on the screen. Hi gentlemen.
In the end, I would like to express my deepest sense of gratitude to the Honorable Dr. Satya Singh ji, MS HRD, for his encouragement. It's my pleasure to thank the Chief Patron and patrons of the conference who made this event possible. Professor R.P. Malik, HOD Physics Department, deserves special thanks for this continuous support. My sincere thanks are due to Professor V.P. Mandal and other organizers of the conference. I would also like to thank all the respective scientists, students and others for listening for my lecture patiently, विशेषकर पूज्य आचार्य जी और सभी आर्यों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न Sir, according to standard model, okay, we have 17 particles, elementary particles. यहाँ आके बोले तो अच्छा रहे। भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ ठीक रहेगा। यहाँ ले जाओ। सबके फेस शुरू करने जाओ, सामने अच्छा लगेगा।